palm oil, maida, artificial preservative, trans fat, it came into Indian household in the form of packaged foods. इंजेक्शन लगे हुए अंडे सब्जियां पनीर you really can't trust what you're eating in today's day. So if there is a brand you can trust and who's ensuring that every single thing that is packed is taken care of, that gives so much security. It is only in the recent years जो हमने देखा है लोग कम से कम पढ़ रहे हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक, मिलेट्स क्या होते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रहा है. इंडिया इज नोन फॉर इनोवेशन. वी इन्वेंटेड यूपीआई. क्विक कॉमर्स स्टार्टेड इन इंडिया फर्स्ट. तो फूड जैसी एक बेसिक नेसेसिटी, वहाँ पे इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा है? इंस्टेड ऑफ मैदा वी एडेड ड्राई फ्रूट्स. Instead of artificial preservatives, we are only using natural ingredients, and the taste is absolutely the same taste you love. और सबसे बढ़िया बात यह है कि गिल्ट नहीं हो रहा है इसे खाने के बाद. देखिए, खाने में ना गिल्ट नहीं होना चाहिए. जिंदगी में बहुत ही कम चीजों से खुशी मिलती है. बिल्कुल. उसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? जंक फूड, वी ऑल लव इट. बरसात के मौसम में गर्मा गर्म तेल में डीप फ्राइड पकोड़े हों या नाश्ते के लिए शाम को बर्गर, पेस्ट्री, फ्राइज. मुंह में पानी आ गया है कि नहीं? लेकिन जरा सोचिए कितना अच्छा होता कि अगर आप ये सब चीजें भी खा सकते और सेहतमंद भी रह सकते. नहीं होता ना ऐसा. बट देयर इज समवन हु इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन गुड हेल्थ एंड गुड फूड एंड गुड टेस्ट. समवन हु इज क्रैक्ड द सीक्रेट, द ओपन सीक्रेट. We have with us today on What's Your Mantra someone who has multiple degrees under her belt, may that be from IIT Mumbai or going all the way to Harvard, and she's here to share her secret with us. Ahana Gautam, the founder of Open Secret. Welcome, Ahana, to What's Your Mantra. Thank you so much for having me, and I'm really looking forward to this conversation. So am I. Please share your open secret with us, Ahana. Ahana, you have cracked the business of food, and especially the kind of food that we Indians love eating. Kachar chatar matar. This is what we do. कि कुछ चटर मटर करने के लिए है क्या? Because most of the times our mummies used to say that बेटा अगर सेहतमंद खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है तो घर का खाना खाओ, दाल रोटी सब्जी, और उससे काम हो जाना चाहिए. But we Indians are some of the most unhealthiest people on the planet right now, and the reason behind that is the kind of food that we eat. जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं. तभी रस्तों पे हमको छोले भटूरे चलते हुए नजर आते हैं. That's right. So what's happening with us Indians? मतलब do we not understand that we need to eat healthy, or is the vibe changing? First of all, I would say life mein, if you're thinking about health, food is 80%. True. So I'm glad that we are having this conversation around food because it really makes a huge difference. Absolutely. And I don't think our mothers were wrong. Ghar ka khana is, I believe, the healthiest food that we could eat. True. Now, जंक कहाँ से आया है? जंक आया है जब आपके पैकेज फूड्स घर में एंटर हुए हैं. अगर आप देखेंगे, मम्मी जो लोग होती हैं, दे आर नेवर मेकिंग फूड इन पाम ऑयल. दे आर नॉट यूजिंग मैदा जब वो रोटी बना रही होती हैं. दे आर नॉट यूजिंग आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव्स इन द घर का खाना. पाम ऑयल, मैदा, artificial preservative, trans fat, it came into Indian household in the form of packaged foods. So जो junk है वो packaged foods की form में घर पे बैठा हुआ है. And what we really need to understand, taste and junk ज़रूरी नहीं है कि आपको जंक ही खाना है if you want to have tasty food. घर का खाना टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है. It's a myth that people want junk food. The reality is everyone wants to eat tasty. Yeah. And now the question that we have to answer, can good food be tasty food? And the answer is absolutely yes. And that's what we're trying to do. आपको मैं एक बिस्किट का एग्जाम्पल लेती हूँ. बिस्किट और कुकीज़ इंडिया में स्नैकिंग फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड है. ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड ईट्स अ बिस्किट एवरी सिंगल डे. Absolutely. You take the big biscuit brands. The first ingredient is maida. They have tremendous amounts of palm oil. Of course, they have artificial preservatives. Now imagine you're eating it every single day. True. You think, oh, it's just 2 biscuits. How does it matter? But think about the negative compounding which is happening. A year later, you would have eaten those 2 biscuits multiplied by 365. So the amount of maida, the amount of palm oil, the amount of trans fat that has entered into your body. Now, what is the open secret? The open secret is, can these bad ingredients be replaced with good ingredients but keeping the same taste? And that's what we call unjunking. Remove the junk.
Instead of maida, we added dry fruits. Instead of artificial preservatives, we are only using natural ingredients. And the taste is absolutely the same taste you love. And this is what we need is, can you replace the junk and make it unjunk? And food is very, very local. I completely agree with you. I have spent years in the US, but in US also we were looking for a bhujia, we were looking for a biscuit, and we needed that with our True chai. that. So we don't have to change our food habits, and I think it's very hard to change habits in food in India. What we really need to do if we want to make India a healthier nation is to give people the product that they are eating, but giving them a better version of that product. And that's the mission that we are on, to take that open secret, convert it into food, and serve it to the customers. And it's going to be entrepreneurs like you who help us Indians live a healthy life and at the same time enjoy the taste that we love, yaar. Absolutely. What's the point of living if you can't enjoy the food that you want to eat? Absolutely, absolutely. Somebody unjunk the pakoras for me, please. But unjunking India one biscuit at a time. Anna Gautam, it all started off with you observing the food culture in the West, especially where you were studying, and you realized that वहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड का प्रचलन था, जो अंडरस्टैंडिंग फूड, हेल्थियर फूड का फैशन था, दैट हैड मूव्ड ऑन एंड यू रियली थॉट दैट वी ऑल्सो नीडेड इट बैक इन इंडिया एंड यू कुड हैव been there, you could have enjoyed your career over there, but you decided to come back to India and help the country live a better life. Take us back to that particular moment once again when this idea conceived. I would take you back to my childhood. आप एक इमेजिन करिए, एक छोटी सी लड़की जो बहुत ही अनफिट है, 3x माई करंट साइज. आई वॉज वेरी वेरी ओबीस. मैं एक राजस्थान के छोटे से शहर भरतपुर में पली बड़ी हूँ. आई वॉज रेज बाय अ सिंगल वर्किंग मदर. और बहुत ही अनसेफ शहर था वो लड़कियों के लिए. तो मेरी मदर हमेशा घर में लॉक लगा के कॉलेज जाती थी और हर दिन मुझे बोलती थी, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना. और दो ही काम करती थी मैं पढ़ाई करती थी एंड आई यूज टू ईट बिस्किट, घेवर. एंड नो डाउट आई वॉज 3x माई करंट साइज, बिकॉज उस टाइम पे जो क्लैरिटी, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं अबाउट फूड, इट वॉज इन देयर. वी वर नॉट अवेयर अबाउट यू बिकम वॉट यू ईट. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पर मदर के लिए कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी वो है. शी वॉज अ वर्किंग मदर, शी यूज टू मेक फूड, बट यू ऑल्सो नीड स्नैक्स for the entire day. Fast forward, I came to IIT Bombay. Even then, I was eating all the junk, never paid attention to what I was eating. It was only when I went to the US, and I still remember I went to Whole Foods and Trader Joe's. Whole Foods, आप imagine करिए, it's like Reliance of the US. And उस store में एक भी junk product नहीं है. उन्होंने बोला है, we will only keep unjunk product on the aisles. And it made me wonder that there is this access which is there for families in the West where you can pick from the best products. And I wondered, why is India such a third world country when it comes to packaged food? अभी हम AI की बात कर रहे थे, अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे. यू नो, नाउ वी आर टेकिंग कॉल्स ऑन Zoom. आप किसी भी एक एवरेज इंडियन के घर पे जाइए, अभी भी मैदा वाला बिस्किट, पाम ऑयल वाले स्नैक्स, ट्रांसफैट वाली चीज़ें ही आपको मिलेंगी. द क्वेश्चन आई थॉट वॉज, ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रहा है. इंडिया इज़ नोन फॉर इनोवेशन. वी इन्वेंटेड UPI. क्विक कॉमर्स स्टार्टेड इन इंडिया फर्स्ट. तो फूड जैसी एक बेसिक नेसेसिटी, वहाँ पे इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा है? And the question I ask, is it a big market? Absolutely yes. Do Indian families deserve to eat better? Absolutely yes. My mother struggled with it, and at the same time, my sister-in-law, my niece is type 1 diabetic, and she was struggling with it. So I could see how generations have passed, but people haven't solved for this. And that was my inspiration to leave everything in the US, come back to India, take that one-way flight from Boston to Bombay, and start on this unjunking mission. And I've realized that फूड में इतना ज़्यादा कॉन्वर्जेशन है, इतनी ज़्यादा फियर, एनजाइटी भी है, एंड आई रियली वांट टू चेंज द डायलॉग एंड द कॉन्वर्जेशन एज वेल, दैट हाउ कैन फूड इज सच अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन. Everything, you know, everything starts with food. So I really also want to empower people with their choices rather than saying, I know what is best for you.
I want to say we know what is a good food. It's an open secret, and we just want to close the supply gap which exists when it comes to good food. Anna, India is waking up to a healthy lifestyle. It is only in the recent years जो हमने देखा है लोग कम से कम पढ़ रहे हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें क्या ingredients हैं, what is organic, millets क्या होते हैं, grains क्या होते हैं. अगेन प्रिटी रूरल और अर्बन के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें तो शहरों के अंदर फिर भी लोगों को समझ में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आ रहा है. हमारे हिंदुस्तान के गांव खेड़ों में पहले से पता था कि उनको कौन सा अनाज उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो खुद उगाते रहे हैं. डू यू थिंक इट इज़ अ गुड टाइम फॉर इंडिया टू मूव टूवर्ड्स अ हेल्दियर ईटिंग लाइफस्टाइल? एब्सोल्युटली. आई थिंक इंडिया में अभी जो एक there's a amazing transition which is happening. If you think about what is the economy size of India, लगभग $4 trillion की इकोनॉमी है. In 10 years, it's gonna become a $10 trillion economy. इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक हम 4 पे पहुँचे हैं और हमारे सामने the country is gonna go from 4 to 10. So imagine the kind of change is gonna happen in the consumption of this country. अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, मुझे याद है जब मैं अपनी मदर को देखती थी, स्टार्ट ऑफ द मंथ उनकी एक सैलरी आती थी और वो एक बजट बनाती थी. ये दूध के लिए, इतना ब्रेड के लिए. नीड्स बहुत ही कम थे और रिसोर्सेज भी बहुत ही कम थे. तो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, उस बारे में ही आप सोचते थे. तो मास्लोज हायरार्की में जो बेसिक नीड्स है, इंडिया एक गरीब देश था और आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे. But the beauty of the country right now is the GDP per capita, which is around 2,800. It's gonna go and cross $6,000 in 2035. Wow. People have money to spend. तो जो हमारे पेरेंट्स सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते थे, आज हम सोच रहे हैं कि वो तो इट्स टेकन केयर ऑफ. वी आर नॉट वरीड वेदर वी विल बी एबल टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल और नॉट. उनका ये कि रोटी खानी कौन सी है. एग्जैक्टली. सो दिस इज नाउ द कॉन्वर्जेशन कि कौन सी अच्छी रोटी है. आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू लुक बेटर, एंड आई विल टेल यू इट्स नॉट जस्ट अ मेट्रो फिनोमिना. वॉट सोशल मीडिया एंड डिजिटल इंडिया हैज डन, दैट द काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू एंड आई आर कंज्यूमिंग इन बॉम्बे, दैट्स द सेम कॉन्टेंट a young girl will be consuming in Bharatpur now. True. And she has the same aspiration and there is money to spend. So it's not just South Bombay or Bangalore phenomena. I really wish that this health movement is India and Bharat both. And the beauty of this is that you have started seeing lot of work which is happening in this direction. पहले सप्लाई ही नहीं था. नाउ द सप्लाई इज ऑल्सो कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड्स लाइक ओपन सीक्रेट. देर इज ऑल्सो अवेयरनेस विच इज गेटिंग बिल्ट when people are consuming the right content on social media, and now brands can have a conversation with the consumer. The communication channel has also started. पहले टीवी होता था, 30 सेकेंड होते थे, there was a one-way communication with the viewer. There is absolutely no two-way communication. Now पॉडकास्ट है, आप कस्टमर्स से बात कर सकते हैं. You know, when I started Open and you can convey your ideas. Exactly, and they can tell you what they need. You know, when it's about food, जैसे आपने बोला कि मुझे अंजंग पकौड़े चाहिए. I'm sure someone is listening and we are also listening. Maybe few months down the line, you will get your anjang pakode. So that's the very good brand name also, Anjang Pakode. Yes, so that's I think the beauty of social media now, that जो एक supply gap होता था where people wanted, but there was no quality products. In fact, 10 years back, if I would have asked you name an amazing brand, you would have called or said a Western brand. True. Western countries, Western brand, that was a sign of luxury, that was a sign of quality. Now there's so many homegrown brands which people are wearing, people are eating, people are putting on their skin, and they're so proud of it. And I think that's the new India, and we're so proud of being part of it. And I think if anyone who's thinking about starting something, this is such an amazing time where I believe there's going to be so much change in consumption where incumbent brands are going to get disrupted with new age homegrown brands. True. I'm going to pick your brains on for ideas for entrepreneurs and budding entrepreneurs out there, because you've also mentored so many of them out, and you have grown into a brand yourself. So we'll come to those ideas also later. But as far as food is concerned,
we are so habitual with what we have been living with all our life. Sugar is the biggest enemy of this country, and it has managed to keep us obese. It has managed to increase the risk of diabetes, which you yourself have discussed. How to break that habit, something that we're so habitual of. I'm sure persistence के साथ होगा. You yourself have done Yes. it. We ourselves who are the consumers are trying our best. मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने रात के खाने पे कंट्रोल कर पाऊँ, heavy dinners ना करूँ, after sunset शाम को 7-8 बजे के बाद dinners ना करूँ, but मम्मी बना देती हैं और फिर मम्मी का दिल टूट जाएगा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो. Sorry मम्मी. But you know what I'm saying, Yeah. no? You end up living the kind of lifestyle that your parents have been living, their parents had been living. How to break the habit of not eating? आपने बिल्कुल सही कहा ना, जो अवेलेबल है वही खाया जाएगा. Yes. अगर चिप्स का पैकेट मिल गया है मुझे तो मैं वही खाने वाला हूँ. To replace those products by healthier products, will it take time? It's going to take time, isn't it? I think it's very simple. It's an open secret. We have unnecessarily complicated food so much. It's not that complicated. Yeah. It's not a rocket science. I'm a big fan of Naval Ravikant. He said, the older the problem, the older the solution. Ooh, yeah. एंड अच्छे खाने की प्रॉब्लम, अच्छे खाने का सोल्यूशन भी बहुत पुराना एग्जिस्ट करता है. वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. देर आर 3 बेसिक्स दैट इफ यू थिंक अबाउट दैट इज एप्लीकेबल इन फूड. फर्स्ट इज you just pick a better version. So when you are eating any meal, घर का खाना खाइए, अच्छे तेल में बनता है, अच्छी तरीके से बनता है, एब्सोल्युटली फाइन. जो आपका पैकेज फूड है वहाँ पे आप rather than फ्राइड चिप्स उसकी जगह आप बेक्ड ले सकते हैं, उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्राइड भुजिया की जगह एक बेक भुजिया ले सकते हैं, मैदा बिस्किट की जगह एक मिलेट बिस्किट ले सकते हैं. अगर आपके खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल हैबिट, मेक इट अ बैलेंस्ड हैबिट rather than saying आज से मैं ये खाऊंगा ही नहीं. वो नहीं होता है. आप अपनी भुजिया खाइए, आप अपने बिस्किट खाइए, आप अपनी फेवरेट चिप्स भी खाइए, बट उसका एक बेटर वर्जन चूज करिए एंड कीप मेकिंग दिस इम्प्रूवमेंट एवरी सिंगल डे. True. आई बिलीव द बिगेस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैपन्स इन हेल्थ. Yes, you've spoken about the compounding. Yes, I think if you think about the skincare industry, there's so many brands like 3-step, 4-step, 5-step, and that has skyrocketed. Why? Because of instant gratification. We True. live in this world of instant gratification. 10 मिनट में चीज़ चाहिए, अभी मैं कुछ खाऊंगा मेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा. बट फूड का जो कंपाउंडिंग है, जो इफेक्ट है, वो आपको लॉन्ग टर्म दिखता है. जी. सो इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ enjoying the food that you're eating. True. and just making better choices every single day. एंड जो आप बात कर रहे हैं खाने की, बहुत ही बेसिक है. आप जब लास्ट खाना खा रहे हैं और जब सो रहे हो उसमें 2-3 घंटे का गैप रखिए. दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. सो ईट राइट, मूवमेंट करिए. इट डजेंट मीन कि आपको जाके हर दिन वेट उठाने हैं. आप बेसिक 2-3 दिन हफ्ते में आप मूव करिए, योगा करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है कंसिस्टेंटली करिए. एंड व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट आना. हम इतना एक मेहनती देश है. इंसान के पास समय नहीं है कि वो जिम जाए और ये सारी चीजें करे. अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते इतनी ज्यादा, कम से कम जो चीज कर सकते हो वो करो, यानी कि खाना सही खाओ. अगर खाना भी गलत खा रहे हो, कसरत भी नहीं कर रहे हो, तो कंट्री तो ओबेसिटी की तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी. एक अनफिट अनहेल्दी इंडिया हमें नहीं चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक 3 चीज़ों पे आप ध्यान रखिए. जैसे आप बोल रहे हैं, खाना अच्छा खाइए, मूवमेंट करिए और स्लीप. स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट स्लीप, चाहे आप जिम कितना भी जाए आपकी रिकवरी नहीं होगी. चाहे आप कितना भी खाए, अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे आप रिकवर नहीं करेंगे. सो if you want to live a healthier life, focus on consistency versus perfection. कभी कभार ये perfection के चक्कर में हम fat diets में जाते हैं and we are not able to sustain that. That I think is a total myth. Just follow and eat what you love and make a better choice. It's not that complicated. I feel my entire health has changed with this basic, simple, open secrets, and I feel the healthiest right now. And I eat my protein, I eat my bhujia, I eat my cookie, and I eat ghar ka khana, and I sleep 7.5 hours, and I try and move 3 times a week. That is my basic mantra, and I think it's working for me, and it's simple. It always works, and it's so good to see a businesswoman, a woman entrepreneur who has
things sorted in her head as far as her life is concerned and her business is concerned. Open Secret is a successful brand at this point of time, Anna, and you've managed to enter the packaged food market in India and change lives for all of us. And the business is doing well. That means people are consuming it, and it means that you've managed to cut across and put your idea into the minds of people. How did that happen? How did you convince the common Indian जिसको वही हैबिट से जुड़े हुई चीज़ें खानी है, उसे अपने वो तले हुए चिप्स खाने हैं? How did you manage to break that myth for that person? You know, when I was starting Open Secret, I knew there are three things that needs to be true. First is taste. Taste has to be extremely good. अगर आपको एक जंक भुजिया है और आपकी एक अगर अनजंक भुजिया है, if I have to replace that junk bhujia, the taste of the unjunk bhujia has to be exactly like the junk bhujia. It can't be 99%, it has to be 100%. So one challenge that we took, that we are not going to launch a product which doesn't taste good. Because as I said, consistency is the most important thing if you want to live a healthy life, and consistency तभी आएगी जब उसका taste अच्छा होगा. So that's number one. Number two, we were very clear when it comes to food, it's extremely difficult to change habits. मैं ये नहीं बोल सकती कि आप अपने snacks खाना छोड़ दीजिए. That's not a practical solution to the problem that India is facing, which is diabetes, obesity. The answer is, can we build a better for you solution with the existing junk categories? So that's how we decided that जो भी लोग खाते हैं उसका एक better for you version देंगे without compromising on taste. And third is, what you promise you will deliver every single time. You say we are in the business of food, I would say we're in the business of trust. And when I say unjunking, I've made 5 promises to our customers. There will never be any maida in our product, no palm oil, no artificial flavor, no trans fat, no artificial preservatives. हम बहुत सारी कैटेगरीज में हैं. हम बिस्किट में भी हैं, चिप्स में भी हैं, भुजिया में भी हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी हैं, प्रोटीन में भी हैं, एप्पल साइडर विनेगर में भी हैं. आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, वी विल नेवर ब्रेक दिस प्रॉमिस. एंड दैट्स द रीज़न वाई वी ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोडक्शन इन हाउस. हमने खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग साइट भी बनाया, बिकॉज प्रॉमिस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है आप क्वालिटी पे कंट्रोल करें, आप रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं. एंड वी हैव बिल्ड दैट एंड टू एंड सो दैट दिस ट्रस्ट इज़ नेवर ब्रोकन. एंड व्हेन यू प्रॉमिस टू अ कस्टमर समथिंग, they eat the product, they love the taste, they see you're delivering on promise every single time. That's how brand loyalty is built. True. And now on quick commerce, आप मान के चलिए अगर मैं 100 रुपये की सेल करती हूँ, उसमें से 80% रिपीट कस्टमर से आता है. So that really talks about that people are not just coming and buying the product again and again, they are buying multiple categories from Open Secret. So when they trusted our Anjunk biscuit, they said, oh, you have also launched a brownie, let me try a brownie, because इसमें मैदा नहीं है, इसमें refined sugar नहीं है, इसमें palm oil नहीं है. Then they try brownie, they say, oh, आप मेरे लिए dry fruits ला रहे हैं जिसको आप sort करते हैं, उसमें कोई adulteration नहीं है. So when you build that trust layer, people start believing in all the products that you're launching within this umbrella of unjunking. So it is the taste which you have paid most attention to, and the ingredients that are going into Absolutely, absolutely. And just consumer is the North Star. Yeah. Every innovation that we have done is basically consumer said, जैसे आपने बोला मुझे ये unjunk करके दो. We said, we are at your service, we will unjunk it for you. So when people ask me who's the chief innovation officer at Open Secret, I said it's the mother, the consumer, who have been asking us, ये unjunk करो, ये unjunk करो. I would have not thought about a lot of products that we have launched today, because it's not for me, it's for all the consumers out there. भाई तो so Open Secret के जो products हैं, they are tasty, but the ingredients are completely different. And how does that make a difference? Let's find it out ourselves then, guys. We will do an actual tasting session, which I promised to Ahana. And we're going to find out from her what are the ingredients in them and how do they taste different. Here you go, guys. We've got a packet of Anjunk. Amazing. And this is what we decided, because we said unboxing to bahut hoti hai, unjunking karenge, and we'll find out what are the things like. So for example, we've got the Open Secret unjunked chip. Can you see this?
Shubham, can you? This is right over here. So tell me, so these are baked, not fried. What are the people who've been eating this generally? The other things that they've been eating, they've been eating fried products. सो आई थिंक अगर आप देखेंगे मैदा बहुत कॉमन होता है स्नैक्स में, फ्राइंग बहुत कॉमन होती है, पाम ऑयल बहुत कॉमन होता है. सो वी सेड वी वांट टू कीप द सेम टेस्ट. We're just going to remove the junk ingredients. The first product that we launched was this purple box. And this is exactly what I fell in love with first. And let me just tell my audience also about this thing. कि the moment we found out was that Ahana आ रही हैं हमारे शो पे और हम ओपन सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. I was doing my research और उसमें एक कुकी के बारे में बात हुई और जैसे वो कुकी के बारे में देखना मतलब ये कुकी तो मैं खा चुका हूँ. ये कुकी तो मेरे ड्रॉर में रखी है ना. ओपन माई ड्रॉर एंड माई टीम वुड वाउच फॉर दिस थिंग कि मैंने बोला अरे यही कुकी तो हम लोग खा रहे हैं पिछले कई दिनों से. एंड आई लव्ड इट. टेल मी मोर अबाउट दैट. So I'll tell you a little bit about the thinking of this product. So first of all, let me tell you the business part of it, and I'll also tell you the product part of it. Biscuit. 40 से 50 हज़ार करोड़ की कैटेगरी है. दिस इन इटसेल्फ इज 4 to 5 बिलियन डॉलर्स. हम बात कर रहे थे मूवी इंडस्ट्री की. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को डबल कर देंगे ना साइज का, उससे बड़ा बिस्किट कैटेगरी साइज है. So imagine the kind of impact that you could create by unjunking a biscuit and a cookie. So you're saying biscuit is bigger than Shah Rukh, Salman, Amir and Amitabh sir combined. The entire Hindi. इंडिया का सबसे बड़ा हीरो कौन? बिस्किट. That's the reality. Now, when, as I said, अगर आप कोई भी एक बिस्किट का पैकेट लेंगे, उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लावर. एंड अगर आप कोई काजू बिस्किट या आलमंड बिस्किट भी लेंगे, उसमें वो उसको बोलेंगे कैशू कुकी, बट उसमें कैशू आप बैक ऑफ द पैक पे देखिएगा, इट वुड बी 0.1 or 2%. नाउ वी से दिस इज एन आलमंड कुकी. यू turn the pack and you see what is the first ingredient. The first ingredient is almonds. And FSSAI की जो गाइडलाइन है जो रेगुलेट करती है फूड इंडस्ट्री को, वो बोलती है कि इंग्रेडिएंट्स हैज टू बी मेंशन्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट. सो व्हेन आलमंड इज द नंबर 1 ingredient in my almond cookies, I have used almond as the majority of the component when I'm making the food. और आप किसी भी बिस्किट का पैकेट उठाइएगा, उसमें कैशू कुकी बोलते होंगे, बट कैशू कहीं तो एंड में आता होगा 1-2%. ऑल आर प्रोडक्ट्स, आप नटी कुकीज़ जो हैं उसमें 40 से 50% नट्स हैं. तो हमने पूरा मैदा हटा दिया और हमने उसको चेंज किया नट्स से. नट्स एक यूनिवर्सल हेल्दी इंग्रेडिएंट है. हम बचपन से सुनते आए हैं सुबह उठ के 5 बादाम खाइए. सो वी सेड, जो आपने बोला व्हाट इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट, व्हाट शुड वी रिप्लेस maida with? We said dry fruits is an acceptable mom approved ingredient. Absolutely. And we started with that. The second thing which I will tell you is about the serving size. देखिए जब बताओ ना, मैं भी तो खाऊंगा भी तो सही. तो जब आप so जब आप प्लीज आप इसको ट्राई करिए. मुझे लगता है I will also consume this. Yes please. And this has to be, this is supposed to be almond nutty cookies. Yes, and you will see it's very differentiated. We never launch a Me Too product. तो आप इसमें बादाम देख सकते हैं. मतलब when we say almond, you can actually see the almonds in it. The other thing which I would say, and this is just 50 calories by the way, just 50 calories. I can't taste the almonds. I can't taste as many badams as in it. बादाम तो बड़े महंगे होते हैं मैडम. हाँ, so that's I'll also come to the margin part of it. But the second thing which I was telling you about food, serving size is very important. घर का खाना हेल्दी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मन करे उतना खाए. So what we have also paid attention to is what is the right serving size. So we have this individually packed, ताकि ये एक 50 कैलोरी का ही स्नैक है. इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम कार्ब्स हैं. द रीज़न आई एम सेइंग 5 grams इज जो डायबिटीज़ जिनको है, जो डायबिटिक लोग हैं, उनको मेजर करना होता है कितना कार्ब्स लेना होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा कार्ब हैवी होगा उतना आपको ग्लूकोज स्पाइक आएगा. ग्लूकोज स्पाइक इज़ रियली बैड, जो बहुत बड़ा स्पाइक आता है. So that's why we have thought about what is the right serving size. This only has, as I said, 50 calories, 5 grams of carbs. In fact, my niece, who's type 1 diabetic, she loves this product and she never gets that nasty spike. So we also pay a lot of attention to serving size, and whenever you're eating food, you should pay attention to how much you're eating. It's not about what you're eating, but also how much you're eating. And I think
the open secret that we have used. So what all goes into this thing? The almonds and So the majority of the product, अगर आप देखेंगे इसमें, it's almonds, and we've of course used chocolate because that brings that taste, and when you're enjoying your coffee, you want a chocolate cookie. That's what we have done. And you were absolutely right. मैदा आता होगा 30 से 40 रुपए पर केजी. Dry fruits आते हैं 700 से 1000 रुपए पर केजी. So this is a premium product compared to that. And then we realized, how can we make it more affordable? Then we launched a millet biscuits where we use the same principle. यहाँ पे हमने मैदा को रिप्लेस किया ड्राई फ्रूट से. मिलेट बिस्किट्स में हमने मैदा को रिप्लेस किया मिलेट से. जी. एंड वहाँ पे हमने निकाला जीरा फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, बटर फ्लेवर. बिकॉज अब मैं आपको बताती हूँ उसमें फीडबैक क्या मिला. लोगों ने बोला कॉफ़ी के साथ तो बहुत मज़ा आता है, बट चाय के साथ मैं इसको डिप नहीं कर सकता, क्योंकि चाय का टेस्ट चाय के साथ आपको एक नमकीन चाहिए. हाँ, तो हमारे यहाँ चाय के साथ क्या हो, रस्क क्या बोलते हैं, रस. तो हमने बोला जीरा बिस्किट निकालते हैं. इट गोज रियली वेल, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ्लेवर. सो दैट इनोवेशन केम बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक दैट प्रोडक्ट मोर अफोर्डेबल. तो अभी जो हमारा मिलेट बिस्किट है वो 20 रुपए का आता है, उसमें 5 बिस्किट होते हैं. सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट, अगर मैं फूड की बात करूँ इंडिया में, इट्स अ ट्राइफैक्टा ऑफ टेस्ट, it's a trifecta of better ingredients, and the third and the most important thing is affordability. Bilkul. So we are also launching more and more products by not compromising on the unjunking promise, but using, rather than dry fruits, using millets, which is more affordable. 100 से 150 रुपए पर केजी में आते हैं. So that is how we are trying to build a portfolio so that there is an unjunk product for everyone. और सबसे बढ़िया बात यह है कि गिल्ट नहीं हो रहा है इसे खाने के बाद. देखिए, खाने में ना गिल्ट नहीं होना चाहिए. जिंदगी में बहुत ही कम चीजों से खुशी मिलती है. बिल्कुल. उसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? क्योंकि आप वैसे भी जंक फूड खा रहे हो तो आपको स्वाद तो मिल रहा है, पर आप रोते रोते खा रहे हो क्योंकि आपको मालूम है, गिल्ट हो रहा है कि यार मैं अनहेल्दी चीज खा रहा हूँ. ये आपने खा भी लिया, स्वाद भी मिल गया, और गिल्ट भी नहीं हुआ. इसी बात पे पैकेट खोलो. ये अगला वाला चीज जो आप, तंदूरी मसाला नटी नट मिक्स. बाय द वे, दिस इज नॉट अ ब्रांड प्लेसमेंट पॉडकास्ट एट ऑल. आना और हमारे बीच में ऐसी कोई डील नहीं. मैं तो एक्चुअली, हमने सोचा कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा ट्राई आउट ही करके देख लेते हैं. तंदूरी मसाला नटी नट मिक्स, रिच इन प्रोटीन, रोस्टेड पावर स्नैक्स, probiotic, prebiotic. This is cool. How does it feel eating your own product? It is, I mean, this product, and I'm not kidding, I'm not exaggerating, मैंने 1000 कुकी खाई होंगी before launching it. But उसके बाद मैंने तो नहीं चालू करा ये ब्रांड खुद के लिए. नहीं, देखिए, हलवाई कभी अपनी मिठाई नहीं खाता. But the point about open, this is all what I eat every day. So when you come on my desk, you will see all our products, and people were like, ये आपका product shelf है. मैंने कहा नहीं, मेरा snack shelf है, मैं खुद इसको रोज खाती हूँ. This is damn neat. Open Secrets का ये अगला प्रोडक्ट विच इज नटी नट मिक्स है. दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो जनरली कीप. अपने साथ में ड्राई फ्रूट्स लेके घूमना पसंद करता हूँ मैं, बट we're all used to that roasted dry fruits. Is this from the same category? Yeah, it's the same category. We have just added some masala flavor. That you know, when you want that चाय के साथ, या मैच आप देख रहे हो, IPL देख रहे हो, वर्ल्ड कप देख रहे हो, you want that masala, right? So that's what we have done. It's pretty desi. It's very desi. It's got its own. When it comes to food, it has to be desi. Yeah, for us for sure. Exactly. What about विदेशियों ने कभी खाया कि नहीं? कभी बाहर लेकर गई अपने हार्वर्ड के दोस्तों को खिलाया सब? मैंने उनको एक बार हाजमोला खिलाई थी. And after that, they have stopped trusting me with the recommendations. वो तो हाजमोला में ही बोल गए होंगे. Oh, so spicy. हाजमोला ही spicy लग गई होगी. This is also very neat. So the dry fruits that I'm eating, Mahana, these are regular dry fruits, or are they also special dry fruits or curated from another space? Yeah, so dry fruits में क्या होता है, देखिए, fruits तो अलग अलग तरह shape and because fruits is a natural product, right? उसमें कुछ खराब है, सही नहीं होता है, पर जब वो processing होती है, it's very important कि आप उसमें उसके multiple QC checks होते हैं. जैसे एक वाइब्रोसिफ्टर मशीन होती है, उसमें जो पत्थर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें लाइक फॉरेन मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, वो सब निकलता है. सो व्हाट वी डू अ वेरी थॉरो QC checks of the dry fruits that we procure, and we ensure that we have women on the shop floor who are checking each and every nut before they are packing. Really? And that's the promise and that's the trust. That's beautiful. And as I said,
अगर आप देखेंगे इंडिया में अभी फूड को लेके इतना ज़्यादा फेयर है कि पनीर भी असली है कि नकली है आपको नहीं पता है, दूध में इतनी मिलावट है. सो इफ़ देर इज़ अ ब्रांड यू कैन ट्रस्ट एंड हु इज़ इंश्योरिंग दैट एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ पैक्ड is taken care of, that gives so much security. Let's say to a Absolutely. mother, to yourself, that what you're putting inside the body is tasty as well as I'm not harming my body. Absolutely. No, at this the day and age जो आपने बात कही, may that be paneer, may that be vegetables, may that be even non-veg, everything, injection लगे हुए, अंडे, सब्जियां, paneer. You really can't trust what you're eating in today's day and age. Yeah. I'm glad that there is a sense of clarity that Open Secrets. Because for me, it's not just a business. It's a personal mission. And like my friends don't understand why I'm this way. I work 24/7. I'm obsessed with this mission of unjunking. I live an unjunk life myself. My team knows about that. I will not eat a maida product or a junk product. And for me, I truly believe that I'm a very privileged person. मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी उस टाइम पे सुना होगा. I think I would be the first girl who went to an IIT and then who went to Harvard Business School, who had a visa in the US. I was living a very comfortable life. But HBS हमें एक चीज़ सिखाता है that we are building leaders who are going to make a difference in the world. And I asked myself that after all these privileges, if I don't build something meaningful, if I don't create an impact, what's the value of all this education? And you did so beautifully with all the women who are working in your firm at this point of time. आपने जिन औरतों का नाम लिया, what Open Secrets does is an open secret that the maximum number of employees in Ahana's company are women. In a factory are mostly run by women. In a factory which is mostly run by women, and it's not only creating the right atmosphere, it also is giving back to the society in a very wonderful way. Anna, how did the idea of having the superwomen team that you have built for yourself? I think you are a product of the crucible moments that have happened in your life. For me, unjunking was an outcome because I ate a lot of junk myself. Now, bringing more women onto this journey is also because of my experience that I had while growing up. देखिए, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे women literacy काफ़ी कम है, women empowerment भी काफ़ी कम है. मतलब mostly अगर आप जाएंगे तो women घूंघट करके रखती हैं. So I came from that place, but the lottery I won was my mother. Yes. She never made me feel that I am any less because I'm a girl. एंड वहाँ पे ना जो सपने देखे जाते थे बच्चों के लिए वो अलग तरह के होते थे. लड़कों के लिए था स्काई इज़ योर लिमिट, लड़कियों के लिए था ठीक है थोड़ा रेज्यूमे बना लीजिए ताकि आपकी शादी हो सके. माई मदर नेवर हैड दैट ड्रीम फॉर मी. शी ऑलवेज टोल्ड मी एजुकेशन लेवल से प्लेइंग फील्ड. डजेंट मैटर आप छोटे शहर से आते हो, डजेंट मैटर आप लड़का हो या लड़की हो. एंड आई थिंक दैट रियली इंस्पायर्ड मी. And the reason I think my mom was able to create an impact because she was financially independent. Yes. So that has stayed in my mind that if you truly want to make a difference when it comes to women empowerment, make them financially independent. Because सिर्फ LinkedIn पे लिखने से ज़्यादा difference नहीं आएगा. We have to really walk the Well talk. said. And for me now when I'm in a position of power where I'm the CEO and I'm hiring, I really want to bring women एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. मैं आपको बताती हूँ स्पेशली जब हमने लॉन्च किया था 2020 में तुरंत कोविड हो गया जी. एंड बिकॉज हम एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं आवर फैक्ट्रीज वर रनिंग. देयर सो मैनी वुमेन हु केम अप टू मी एंड सेड बिकॉज ऑफ यू मेरे घर में चौका चल रहा था. बिकॉज दे वर द ओनली सोल ब्रेड अर्नर्स इन द फैमिली. समबडी केम एंड टोल्ड मी कि मैं पैसे कमाती हूँ तो मैं अब चला सकती हूँ कि मेरी लड़की को क्या पढ़ाई करनी है. विच आई नेवर वुड हैव मेड दैट डिसीजन बिकॉज आई वॉजंट ब्रिंगिंग मनी इन टू द हाउस. And it's important to bring and make a difference there because they need it the most. True. So for me, empowerment is not just about inspiring young women. It's also about making them capable and giving them opportunities so that they can earn their own money. Yeah, and these all the women, you have a factory in Bhandup if I'm not Yes, wrong. yes. And these are women from surrounding places. These are women from Maharashtra who come and work at your place. Yes, and 24th July is my birthday, and they all know about my love for unjunking.
So I still remember the one person, she got me laddus and ये बोला ये मैंने जैगरी और गुड़ से बनाए हैं, इसमें मैदा नहीं है, इसमें कोई चीनी नहीं है, because मुझे पता था आप नहीं खाओगे. Wow. So it just melts your heart. And you know, every single year on my birthday, people ask me what are your birthday plans. In the evening, I don't go out and party. Every single of my birthday is spent at my manufacturing plant, and I will tell you, they make me feel so special. I can imagine. And you can see and feel the real love. And this journey is very stressful. I mean, there are the moments when it's so low, but you are reminded of those moments where there's so many livelihood dependent on what you do. True. And I feel, okay, there is a pressure on my shoulder, but is it worth it? And then you go back to the why, you go back to the purpose, and you realize every single pain, every single day of rejection is worth it if this is the outcome. And this is such a pious space that you have moved into, not only helping out the society by eating better, helping us understand the science of food better, but at the same time, with your workplace, with your workforce that you have incorporated in your company, it is clearly a space that good karmas will follow Open Secrets all throughout. Women entrepreneurs even, Anna, I've met so many of them, and it is wonderful to see that you were not born with a silver spoon in your mouth. You weren't born to the Ambanis or the Tatas in big cities where you could have, things being placed in front of you. A lot of women out there who want to be entrepreneurs are looking up at you right now. What's that one tip that you would like to give to young entrepreneurs, women or men, to be able to follow their own dream? I think you need to have insane resilience. All the successful people, unfortunately, we only hear about the success stories. We don't hear about the rejections and the heartbreaks. And हमें लगता है कि life is like a शाहरुख खान movie. एक दिन आता है, आप गोल करते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है. It's not that. बिल्कुल सही. It has to be about the hustle every single day, the discipline every single day, showing up when you don't want to work. That what makes a difference. And especially आप entrepreneurship की journey में ना, आपको 100 rejections मिलेंगे, एक acceptance मिलेगा. But you have to build that muscle to accept that 100 rejections. बिल्कुल. It's like going to the gym, right? If you want to build that muscle, you have to practice leg workout, arms workout every single day, right? And that's a similar resilience that you need to bring when you are building something, because there are days when you're gonna want to give up. And those days, the power of resilience will ensure that you remember your purpose, you remember your why, and you keep doing at it. Well said, Anna. 100 crore कंपनी, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कितने जीरो लगते हैं उसके अंदर, लेकिन it must have, it's not an easy job to be able to raise the kind of funds out there, to be actually convincing people that this would work. How tough was that to get your investors interested in you and to convince them that this is something that India needs? So, देखिए, value creation only happens when you solve challenging problems. True. So, if you want to make an impact, you really need to be very comfortable in solving most difficult problems, and you have to break it down into very simple things. And I think that comes to me because of my engineering days. जब आप एक investor को pitch करते हैं, they are looking for 3 things. वो देख रहे हैं ये मार्केट बड़ा है कि नहीं है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ 10x रिटर्न. तो अगर आप आज 10 करोड़ हैं तो वो देख रहे हैं अच्छा आप 1000 करोड़ का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ आउटकम दे आर लुकिंग फॉर. सो द क्वेश्चन विल बी, is food, junk food, a big enough problem or not? The answer was absolutely yes. I mean, they can also personally relate to that problem. They can also see a lot of families, whether in Bharatpur or Bombay, struggling with that. So that number one thing is market. The second thing is, are you the right person to solve the problem? And there, the answer is about the founder market fit. Do you have the relevant experience? Do you have the relevant... A lot of times I also feel that because for me, that personal experience was the fuel I wanted to solve the problem. That definitely helps because during tough times, I'm solving it for a bigger reason. It's not just for a financial reason that I want to make money and then want to exit. I really want to make a difference and I want to create a brand for both India and Bharat. So it's about the founder, whether...
you can really solve this difficult problem. And the third thing is PMF, which is product market fit. सबसे आसान लाइन है, हम एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे जो हेल्दी भी और टेस्टी भी है, बट एग्जीक्यूट करना, कस्टमर से एक्सेप्टेंस लाना, दैट इज द रियल मैट्रिक. सो वो क्या चीज़ें चेक करेंगे, वो देखेंगे कि रिपीट कस्टमर्स कितने हैं. आप कस्टमर्स को बेच रहे हैं, बट आर कस्टमर्स कमिंग एंड बाइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आर यू एक्चुअली रिप्लेसिंग द मैदा बिस्किट? On Blinkit, in the premium biscuit segment, Open Secret is a number 1 brand. Number 2 is Britannia. So that's the PMF they're looking for, that you can actually in a big market create your own existence. So repeats, NPS, Net Promoter Score, these are some of the metrics that they will look at. And if these 3 things tick, 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 I think that's how an investor will come on board. And I think you've absolutely crafted a success story, and of course a great product too. From someone who's been there, done that, what kind of products would you like to see from young entrepreneurs out there, or people who are thinking about, जो जिस तरीके से आपने एक आइडिया को क्रैक किया कि यार देश में इस वक्त की एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम है जंक फूड, और मैं उसके ऊपर काम करना चाहूँगी. 1 or 2 things that you would like to see some other entrepreneur be working towards? I think consumption and consumer brands, this is such an amazing place. और आप हर जगह देखिए disruption हो रहा है. When you think about fashion, people are talking about sustainable fashion. There's a lot of wastage over there. The second industry, you can think about pet care. People are now having more and more pets. So it's not just about the products, but they're also thinking about the services. The third is quick commerce is becoming a habit. True. So it's not just about the food grocery. Now you can get your maid also in 10 minutes. Yes. You are getting your clothes in 10 minutes. Absolutely. So there's a huge opportunity where quick commerce is becoming a feature. So in any industry, can you make it at 10 minutes? I think that is going to be a big opportunity. And then also the D2C brand enablers, quick commerce enablers. क्या होता है, ये सारी चीज़ें, these are like the sexy things, you know, you hear about it, you consume it. But what about warehousing? अगर आपको क्विक कॉमर्स को डिलीवरी करना है, वो 200 शहरों में है, तो आपको कितने सारे वेयर हाउसेज होंगे टू डिलीवर इट टू देम. एंड नाउ अ ब्रांड लाइक मी, आई डोंट वांट टू आल्सो गेट इनटू द बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग. आई वांट टू फोकस ऑन इनोवेशन, ऑन प्रोडक्ट, एवरीथिंग, बट आई वांट टू पार्टनर विद वेयर हाउसिंग पार्टनर्स. सो द इनेबलर्स ऑफ दिस D2C and quick commerce, that's an excellent opportunity. All these things. So I think India right now, there is like massive opportunities. You just need to identify a problem that you love, you are passionate about, and just go for it. आपने हार्वर्ड में समय व्यर्थ नहीं किया है. एक एक पल का आपने पूरा इस्तेमाल किया, और बिल्कुल सही आइडिएशंस के साथ you've come back to the land that gave you so much, and you're giving back to that country. Thank you so much, Anna Gautam, for who you are and what you managed to craft for yourself and for the society. Thank you very much. No, thank you so much. It's always a pleasure to talk about health, to talk about food, to talk about women empowerment, and most importantly, my only obsession, Open Secret. Thank you very much. That was What's Your Mantra? मैं पैकेट ले जा रहा हूँ.